Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, हालचाल. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. बहुत बढ़िया सर, आप बताओ. गुड मॉर्निंग सर. वीकेंड एंजॉय किया? गुड मॉर्निंग सर. दबा के सर. वीकेंड कैसी रही सब लोगों की? घर में बंद? क्या ही वीकेंड. बाहर घूमने निकले थोड़ा आप लोग? नहीं. डंडा खाना है सर. क्या हो रहा है? सर, बाहर निकलना है, डंडा खाना है क्या? हाँ, सही बात है, सही बात है. डंडा खाना है क्या? सब लॉकडाउन. सही बात. सैटरडे चलो. संडे और स्ट्रिक्ट हो गया सर. हाँ, नहीं होना भी चाहिए. जो हालत है उसके हिसाब से तो होना ही चाहिए. और स्ट्रिक्ट वो क्या करेंगे? हमें खुद करना चाहिए स्ट्रिक्टनेस. हो जान बचे तो लाख उपाय सर. लाखों उपाय नहीं, करोड़ों उपाय यहाँ तो. हाँ. आप लोग तो खास करके करोड़ों पाए. जब आप जहाज में होगे तो करोड़ों मिलेगा ना. चलो ठीक है, अटेंडेंस होने दो. 2 मिनट में क्लास शुरू करते हैं. We'll start in just 2 minutes. ओके सर. रितेश, तुम्हारा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है. रिकॉर्डिंग में क्या आएगा? गुड मॉर्निंग कनिष्क भाई. कौन? एडमिन साहब? हाँ आदित्य. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है कि नहीं? नहीं सर. नहीं, हो चुकी है. रिकॉर्डिंग हो चुकी है. सुमेश ठीक है ना हुण? Okay, last class what we have been doing. आदित्य तू भी आई बाहर. ओए आदित्य, जवाब दो. तेरा फ्रेंड बुला रहा है तुमको. All right. So I think we were doing EM log. Is that correct? Yes sir. यस सर. Okay. So EM log में हमने speed through water and speed over ground की concept समझी थी. कि what is this that we are using? It's not just about कि ये current के साथ होता है, वो current के साथ नहीं होता है. No. ठीक है, वो होता है, but you should feel it inside. This is what I need. ऐसे होगा तो आप सही स्पीड यूज कर पाओगे whenever there is special need for one speed or the other. So Asad, coastal navigation. यस सर. कोस्टल नेविगेशन में क्या करेंगे? सर कोस्टल नेविगेशन एज इन सर. कोस्टल नेविगेशन के लिए what we will use? Sir, we'll use the EM log, Doppler log. EM log, Doppler log. Which one of them? EM log or Doppler log? Sir, Doppler log.
Doppler log in coastal water. Why will you use Doppler log? Okay. Okay, Mukul, you tell us. Mukul, Yes, sir. why are we going to use Doppler log in coastal waters? सर डॉपलर लॉग यूज़ करेंगे बॉटम ट्रैकिंग मोड में ताकि हमको स्पीड ओवर ग्राउंड मिले. Very good. That means what we require in the coastal area, when we see our movement with respect to ground objects, like buoys, lighthouses, shallow patches, wrecks, which are fixed objects on the ground, but I am moving with the current, so I have to see my movement. How am I moving with a fixed object? With respect to fixed object, that means I have to check out my speed over ground, and for that we have Doppler log. Sea navigation, deep sea navigation, open sea navigation. Gurpinder, Yes, sir. open sea navigation, what we are going to use and why? Sir, EM log we are going to use for open sea navigation because we cannot track bottom of we cannot track our bottom with Doppler log in open sea. नहीं समझ में आया तुम्हारा माइक्रोफोन थोड़ा गड़बड़ है. थोड़ा एक बार माइक्रोफोन मुंह के नजदीक लाके बोलिए, थोड़े पीछे साउंड आ रही थी. ट्राई अगेन. सर बोल रहा हूँ कि EM लॉग से हम ओपन सी में अपनी स्पीड देखेंगे क्योंकि डॉपलर लॉग से हम बॉटम को नहीं देख सकते, बॉटम ट्रैक नहीं कर सकते डॉपलर लॉग यूज करके. ओ, तो ये मजबूरी हो जाती है, इसलिए हम लोग डॉपलर लॉग यूज करते, मतलब ईएम लॉग यूज करते हैं. मजबूरी होती है कि डॉपलर लॉग रीड नहीं कर सकता. मान लो मैंने आपको डॉपलर लॉग दे दिया जो कितना भी डेप्थ हो उसमें काम करता है, तो विल यू बी हैप्पी? नो सर, स्पीड थ्रू वाटर भी हमें देखनी पड़ती है सर ओपन सी में. Open sea में there are floating objects only. I am a ship, others are also ship only, one way or the other. So we are going to see our movement with respect to each other. How the current is, इसका effect नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. EM log gives us speed through water. So did we talk about the principle of EM log? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, Divyansh. What is the principle? सर मैग्नेटिक फील्ड में से जब भी मैग्नेटिक फील्ड में से जब भी कोई कंडक्टर पास होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ड्यू टू फ्लक्स. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन करूंगा. इलेक्ट्रिसिटी तो होगी, हाँ, ईएमएफ बोलते हैं उसको. ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड नहीं बोलते हैं. ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वोल्टेज क्रिएट हो जाता है दोनों एंड के बीच में. अगर वो दोनों एंड क्लोज सर्किट हो तो बत्ती जल जाएगी. Yes, sir. So this is the principle. Okay, we will go through the slides, and through the slides we will see more of this. Just one second. Let me find out the file. अरे खुल जा, धीरे धीरे चलता है.
Just 1 second. तो हमने ये प्रिंसिपल देख लिया था, करेक्ट? The three factors on which the EMF or induced EMF will depend is the strength of the magnetic field, कितना strong magnetism है, कितना field का strength कितना है उसके ऊपर, also the length of the conductor cutting the lines of forces. That means if we have ये क्या होगा, if we have a magnetic pole like this, north south, जो lines of forces हैं इसको कट करता हुआ जो कंडक्टर होएगा, that is what is considered. So what we generally do if we want to have longer wire, we make a coil of this and the two ends are like this. So length of the conductor, cutting the lines of forces. Next one is the velocity, at which speed there is relative motion between the magnetic field and the conductor. That is basically to say change of rate of change of flux associated with the conductor. In most cases, we will have this constant, this one as constant. So सिर्फ एक चीज जो बच गया वो ये है. That means the relative motion between conductor and the magnetic field. No relative motion, no speed, no EMF. थोड़ा थोड़ा speed, थोड़ा थोड़ा EMF. ज्यादा speed, ज्यादा EMF. So these two things, the first and the second on the list, strength of the magnetic field and length. If these two are constants, only one factor is determining the EMF induced, and that will be at the rate of change of flux. Of course, इसके साथ एक constant आएगा. This constant is because of the magnetic field, because of the length of the conductor and all that. So system to zero constant रहेगा, system constant is constant. Now everything will depend at what rate the flux is changing associated with this. Now having done all this, we also talked, I suppose, that if there is a battery has got potential difference, let us say 12 volt, but current इसमें flow कर रही है क्या कहीं से कहीं? No, sir. No. Only when it is connected externally and the circuit is complete, एक बल्ब लगा दिया तो इसमें करंट फ्लो करता है, करेक्ट, और बल्ब जलने लगती है. सही है ना? सही है ना? So if there is this coil which we said, और इसमें दो एंड है, एक प्लस एक माइनस हो गया, EMF तो हो गया. If it is a closed circuit like what we saw in the previous diagram, अगर इसको हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं. गैल्वेनोमीटर मतलब छोटे छोटे करंट को रीड करने के लिए, बहुत हल्के करंट को रीड करने के लिए एक डिवाइस होती है, मीटर होता है बेसिकली, निडल वाला.
तो अगर हमने ये कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गई या नहीं, ये वाली क्लोज सर्किट हो गया या नहीं? यस, यस सर। क्लोज सर्किट हो गया क्योंकि यहां से यहां पूरा कंप्लीट है. So this is the closed circuit. If the circuit is closed, then there will be a current through the conductor also. नहीं तो कंडक्टर में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव तो हो जाता है, ईएमएफ तो हो जाती है. अरे ये क्या हो गया? ओह रे, कुछ हो जा रहा है. So the current, induced current also has a direction. कि भाई कंडक्टर में किधर से किधर को करंट फ्लो करेगा. So this diagram is explaining the direction of the current flow. Remember that the current flows from positive terminal to negative terminal. करंट जो फ्लो करती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है. So in this, what is happening? Here you have the coil which is fixed, and there is a magnet which is moved in either direction, either left to right or right to left. As you can also see in the first case, red, for example, when the magnet is moving from left of the screen to the right of the screen, the current flows in this direction. But the same thing, when the magnet is moved from right of the screen to the left of the screen, then the current is opposite direction. It is shown here also by the arrow. So current ka direction will depend on the motion, but it is also related to the direction of magnetic field. So in which direction the current is flowing, there are three factors which govern this. One is the magnetic field, other is the motion, and that is described by how to find out the direction of the current. It is described by something called Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. Now, what is Fleming's right hand rule? Stretch the three fingers, the thumb, index finger, and middle finger. So the middle finger gives you the induced current direction. See and study this in close-up and try to understand this. ठीक है? Any doubt? कोई कुछ बोलता नहीं जी, क्या बात है? Nobody is speaking. Why? ये तो क्लास खूब खूब चमकता रहता था, खूब बोलता था. सर ये समझा दीजिए सर आंसर. Yes, ऐसा बोलो ना. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसी के लिए मैंने उसको हटाया और आपके स्क्रीन पे आया हूं ताकि मैं बता सकूं. मुझको लगा कि थोड़ा दिक्कत हो रही समझ में.
So you remember that there was a magnet. There is North Pole and South Pole. The lines of forces go from North to South Pole. So direction of the magnetic field is measured like this. It is convention. ये नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल में जाती है। तो इस नॉर्थ पोल से निकल रहा है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर को जा रहा है। So this is the direction of the magnetic field. The three fingers that we have stretched is mutually perpendicular to each other. इसके perpendicular, इसके perpendicular, इसके perpendicular. So three fingers are perpendicular to each other. And suppose that this is the north, this is south. That means, let us say this is the direction of magnetic field. And if this is the motion, thumb is the motion, then the third one will be the induced current. कहने का मतलब ये कि अगर हमने एक कंडक्टर को ऐसे पास किया इसके भीतर से, तो it is coming is the motion vector like this. ये इधर से इधर को जा रहा है कंडक्टर या नहीं? This one. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल करके रखा है। So this is the magnetic field, this is the motion, then the current will be flowing in this from top to bottom. अगर मैग्नेटिक फील्ड वही रखें, मोशन बदल दें, अब कंडक्टर इधर से इधर को आ रहा है। अगर मोशन बदल दें ये इधर को, तो करंट फ्रॉम नीचे से ऊपर। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is called right hand rule or Fleming's right hand rule. This is to find out the direction of the current. Remember, all are mutually perpendicular. Magnetic field, motion, and induced current. So now that we have understood what is Faraday's law, electromagnetic induction, what are the factors on which the induced EMF will depend on? Induced EMF will cause induced current if the circuit is closed. And how do we find out the direction of the induced current? By Fleming's right hand. उसमें हमने ये भी देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रखते हैं, तो करंट is a direct function of the, yes, direct function of what? If magnetic field constant, if length of the conductor constant, then the induced current will depend only on what? Rate of change of magnetic flux. Very good. Rate of change of flux, that means the velocity. We also found out कि क्या direction होगी current. Fleming's right hand rule. अब जहाज में जब हम चलते हैं तो पानी पीछे की तरफ जाता है, हम आगे चलते हैं तो पानी पीछे जाता है. So there is water flowing. Is the water conductor of electricity? Salt water ऊपर से? Yes, sir. So there is a conductor in motion. All we need to do is place a magnetic field और इसमें से पानी को पास करा दें, तो उस पानी के थ्रू करंट फ्लो करेगा या नहीं? Electromagnetic induction. Conductor is moving in a magnetic field. Current will be there through the water. Yes, sir. Or no? So this is just the principle which is used for EM log. How it is made, what is done, we will go and see it on the screen. The EM log design is very, very simple.
वेरी सिंपल। एक पाइप होती है जिसके थ्रू वाटर फ्लो कर सकता है, और उस पाइप के ऊपर नीचे में हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। जैसे कि अगर ऐसा पाइप है तो पाइप के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, तो पानी यूं बह रहा है पाइप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड से, और इस बीच में यहाँ करंट हम पिकअप कर लेते हैं। कितना करंट? जीरो करंट है तो स्पीड कितनी है पानी की? 0 सर। एग्जैक्टली। थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है मतलब स्पीड कितनी है? थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़े सही। थोड़े। अगर ज्यादा करंट डेवलप हो रहा है मतलब स्पीड ज्यादा है पानी की, और जो पानी की स्पीड है वही हमारा स्पीड थ्रू वाटर है। हम खड़े होकर के जहाज के बगल में देखें, हल के बगल में, the speed of the water, that is my speed। पानी जितनी तेजी से पीछे जा रहा है, मैं उतनी तेजी से पानी के आगे जा रहा हूं, पानी में आगे जा रहा हूं। So now we'll share once again the slide, and we see the construction of an EM log in the ship, how it is devised। very simple design, कुछ है ही नहीं उसमें। So let me share once again। All right, so ये देख लीजिए Fleming's right hand rule। Next, how the EM log is constructed on the ship। So, as we had said in the earlier class itself, that current and magnetism are interlinked together। So, अगर हम एक कॉइल लेते हैं ऐसा, और कॉइल के थ्रू करंट डाल दें, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। So, अगर इसको जो रेड वाली कॉइल है इसको सोलोनॉइड बोलते हैं, क्योंकि ये पाइप के शेप में है। अगर देखा जाए इसको तो ये कॉइल जो है एक पाइप के शेप में है या नहीं? इसके थ्रू एंड थ्रू होल होएगा, तो इसको सोलोनॉइड बोलते हैं। If we place a magnet or ferromagnetic material inside, इसके भीतर में अगर एक लोहे का पीस रख दे, तो ये लोहे का पीस भी नॉर्थ साउथ बन जाता है। This is what we are calling an electromagnet। जो ऑरेंज कलर का आप पीस देख रहे हैं, जो आयरन का पीस है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, that by itself is not a magnet। लेकिन जब हम करंट देते हैं इसमें कॉइल में, तो उस करंट के चलते एक मैग्नेटिज्म बनती है, और उसके चलते ये जो पीस ऑफ आयरन है वो भी मैग्नेट बन जाता है। हम करंट को बंद करेंगे तो मैग्नेट भी खत्म, सॉफ्ट आयरन होती है। So magnetism can be created by current। So in the shape EM log, magnetic field is again provided by electromagnet, which is made in the similar way a solenoid। सोलोनॉइड क्या है? ट्यूब शेप का जो कॉइल बनाया हमने यहां से वहां तक, उसमें करंट डालते हैं, सप्लाइड विथ करंट, then it becomes electromagnet, magnet because of electricity। Then there is a pipe, basically a piece of pipe called a flow sensor or rod meter। The water can pass through this। It is
non-magnetic. That means if we have the pipe like this, तो पाइप के ऊपर नीचे में हम नॉर्थ साउथ बनाते हैं। कहने का मतलब कि if this is in this direction, perpendicular to that is the magnetic lines of forces. So do we have water flowing through this tube? When the ship will go forward, the water will go inside and through it will pass. Is that correct or not? Through the tube? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सीधी सी बात है। अगर पाइप ऐसे है, जहाज आगे जा रही है, पाइप इस जहाज के साथ फिटेड है, तो पानी इसके भीतर से पास होएगा ना, इसके होल से इसके थ्रू जाएगा। और यहाँ पे हमने नॉर्थ साउथ करके एक मैग्नेट लगा दिया। That means there is magnetic lines of forces between north and south, and through that there is a conductor which is flowing, liquid conductor. अगर हम सामने से देखें तो ट्यूब आपको सामने से ऐसा दिखेगा पाइप, और उसके ऊपर में नॉर्थ साउथ ऐसा दिखेगा। इसको दूसरे कलर बनाते हैं। अगर सामने से ट्यूब को देखें तो आपको सिर्फ होल दिखेगी, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ साउथ अगर हमने कर दिया, और इसके भीतर मतलब बाहर से स्क्रीन में into the screen there is this water flowing. If there is a current, what is the direction of current? किधर से किधर को जाएगा? Now that you know about it. You know that north is here, ऊपर में north है, नीचे south है. Lines of forces are running from north to south. The conductor is flowing from outside into the screen. Then tell me, where will be the current flowing? How the current will be flowing? Left to right. Left to right. Very good. So अपने इंडेक्स फिंगर को हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स रखते हैं, नॉर्थ टू साउथ, और थंब को इनटू द स्क्रीन करते हैं। Do this again. Your finger should be the middle finger, sorry, not middle finger, index finger should be from towards the ground. The thumb should be pointing into the screen. Then middle finger, where does it show? Find out the direction of current. Yes. Fleming's right hand rule apply karo. Come again. Left to right. Left to right. Think again. The thumb should be pointing into the screen. Index finger from top to bottom, pointing towards the ground. नॉर्थ साउथ से। नॉर्थ साउथ ये क्या होता है? नॉर्थ साउथ करंट का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होता है। लेफ्ट राइट होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट लेफ्ट राइट तो नहीं होगा। Outwards from the screen. As we said, Fleming's right hand rule will be applied. अभी जो हमने डायग्राम देखा था, दिमाग में होगा आपके, magnetic field was like this. Is that correct or not?
नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था. Yes, sir. We said the current was going, the current मतलब water was flowing into the screen. हम सामने से देख रहे थे, तो water was going inside. So this thumb, is it inside, going into the screen? Magnetic field like this, motion like this, then the current from left to right, is that what it is? Saffron, right to left. right to left. If the magnetic field was reversed upwards, current again into this, the current will be flowing in that direction, left to right. अगर मान लो कि ऐसे ही है and the direction of the current is changing, I mean the direction of flow of water when the ship is going astern, current वापस चलेगा, water flow वापस होएगा, so that will be coming out like this, the thumb towards me, so the current will be going in this direction from left to right. So लेफ्ट टू राइट जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा सर. north to south नहीं जाएगा, they are mutually perpendicular to each other ना, north south तो magnetic field है. कैमरा ऑन करो अपना, switch on your camera. विपिन, हाँ, ओके. राइट हैंड दिखाइए, थोड़ा सा कैमरा हल्का सा दूर करो, थोड़ा सा. ओके, नाउ यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन. अपना फिंगर को अप डाउन कीजिए, मिडिल फिंगर को, और थंब को इनटू द स्क्रीन कीजिए, इनटू द स्क्रीन. मिडिल फिंगर किधर को दिखा रहा है? सर लेफ्ट राइट. इधर को? सर लेफ्ट राइट सर. नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट. इधर को दिखाएगा ना. मिडिल फिंगर, सॉरी इंडेक्स फिंगर लाइक दिस. कैमरा क्यों बंद कर दिया? ऐसे ही तो लेफ्ट टू राइट आ रहा है ना कैसे? सर, जब राइट हैंड लेंगे और मिडिल फिंगर नीचे को जाएगी तो लेफ्ट साइड से ही आएगा ना. नहीं, सुनो फिर से. जहाज इधर को जा रही है, जहाज ऐसे चल रहा है, तो पानी ऐसे को जाएगा या नहीं? पीछे की तरफ. जहाज ऐसे चल रही है तो पानी पीछे की तरफ जाएगा. सर, दैट मीन्स थंब का डायरेक्शन उधर को हो गया, पानी का डायरेक्शन. यस सर. अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में? ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन है. यस सर. तो इसको हम यूं करेंगे. यस सर. तो मिडिल फिंगर किधर को दिखा रहा है? अब दिखा रहा है सर राइट टू लेफ्ट. अगर पानी के रेफरेंस से ले रहे हैं तो, अगर शिप की रेफरेंस से लेंगे तो लेफ्ट टू राइट होगा ना. यस. तो हम शिप की हमने बात करी, कंडक्टर की मोशन बात करी ना. रेफरेंस गलत ले लिया. यस सर. रेफरेंस गलत ले लिया. अंडरस्टूड नाउ? यस सर. यस सर. We see the motion of the conductor, not the ship. शिप इधर को जा रही थी, जैसा हमने बात किया. शिप इधर को जा रही है तो पानी ऐसे जा रहा है, वापस जाता है ना ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर शिप इधर को जाएगी तो पानी ऐसे आएगा. So we are taking the direction of the conductor, which is the water, flow of water. So the ship is going like this. हमने कहा था, जो अभी पिछली ड्राइंग बनाई थी, कि we are looking from the forward. तो पानी भीतर की तरफ जा रहा है क्योंकि जहाज ऐसे आ रही है.
The ship is coming like this. The water is going opposite direction. So this is the direction of the water. Magnetic field like this. So current in this direction. Change the magnetic field and the direction of this, again it will remain. Both the things if reversed, उसका current वही रहेगा. एक चीज बदलोगे तो दूसरा बदली हो जाएगा. Clear? Yes, sir. Okay. So this is the construction. Sharing once again. So we will see all this in a new design or new diagram basically on the screen. So we have that pipe is called flow sensor and it is arranged in this manner. चलो हम लोग directly चलते हैं diagram पे. Here is the arrangement, basic schematic arrangement of the EM log. The shape is like this. The bow is here, the shape goes forward, then the water goes backwards inside the tube. Is that correct? In this diagram, the gray color pipe which you are seeing is the flow sensor. It is a non-metallic, non-conductive type of tube through which the salt water is passing. As the ship comes forward, the water will go backwards. When the ship will go stern, the water will come from back to forward. That means going astern, the current will flow in this direction, the water current. The north-south is placed like this. The magnetic field is placed, or is placed in a vertical direction, which is basically made up from solenoid. एक केबल में करंट दे देते हैं तो ये ब्लू वाली जो है ये बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो फॉर एंड आफ्ट लाइन में फ्लो सेंसर, वर्टिकल अलाइनमेंट में मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर which is athwartship direction is the current. Induced current will be flowing either from port to starboard or starboard to port, depending on the flow of water. So, to get your understanding clear, tell me that, okay, there are three things being shown here. One is the flow of the water. Next one is the direction of magnetic field north to south. And there is also the direction of current, induced current. Tell me if this diagram is all right or you are noticing some problem with this. Yes, please. Is it okay? Or is there any problem? Is it all clear or not? Clear, sir. Clear. So the current will be flowing from port side to starboard side. अगर जहाज ऐसे है, so this is of course port side, this is starboard side. So from port to starboard it will be flowing. Is that correct? Yes, sir. Port to starboard. Yes, sir. Very good. अपना नाम बताओ. कौन बोला? नाम बताओ.
इतना टाइम क्यों लगता है रिस्पॉन्ड करने में? रिद्धेश सर। कौन? विपिन? अच्छा विपिन, फिर से राइट हैंड अप्लाई करो और बताओ सही से। सर रिद्धेश ने बोला। अच्छा नीतीश, दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम। मैग्नेट का डायरेक्शन सर साउथ टू नॉर्थ दिखा रखा है। करंट विल बी फ्लो, क्या चीज? साउथ टू नॉर्थ क्या है? साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है, और इसने अप्लाई कर रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, बट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को होना चाहिए था, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सर, एग्जैक्टली, अपोजिट साइड। दैट इज जस्ट आई वांटेड यू टू थिंक, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड यू टू थिंक। दैट मीन्स नाउ यू आर थिंकिंग, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन गलत दिया हुआ है, इसलिए करंट का डायरेक्शन भी गलत है। एक्चुअली नाउ दैट वी अंडरस्टैंड दैट इट इज इन दिस डायरेक्शन। So here the current will be, sorry, magnetic field will be like this, and the current will be in this direction. So theory understood? यस सर। How the EM log is working? Now when the current is flowing, the water is flowing, of course if the ship is stationary, if the water is stationary, no current will be there, no current is there. But if the speed of the ship is slow, engine speed slow, that means water passing by little slow, तो थोड़ा थोड़ा करंट आए। ज्यादा तेज होगी तो ज्यादा करंट। If we plot a graph between the two, speed of the ship and the induced current, ये होता करंट बहुत ज्यादा नहीं है, मिली एम्पियर्स में होता है, but there is a constant proportional relationship between the two. If zero speed, zero current, इतना स्पीड इतना करंट, इतना स्पीड इतना करंट, इतना स्पीड इतना करंट, इतना स्पीड इतना करंट. So as the speed is increasing, so does the current. So एक बार जब इसको कैलिब्रेट कर लिया जाता है, then we find out कि current is this much, then the speed must be this much. ये स्पीड है. हम इस करंट को देखते हैं, जितना करंट उसी के प्रोपोर्शनल में स्पीड जहाज. अगर स्पीड करंट कम हुआ, इतना हुआ, then the speed is this much. So once we have calibrated, we look at the current. This current is basically amplified and used to drive a display, either analog or digital. तो इसी करंट से हम या तो एक एनालॉग मीटर को ड्राइव करते हैं, इसमें 5 नॉट 10 नॉट ऐसा होएगा, 15 नॉट फॉरवर्ड स्पीड, ऑफ स्पीड, or it can be shown in a digital display, like what we say 7-segment display. 7 segment because 1 segment, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ऐसा या किसी तरीके का, आजकल तो एलईडी वगैरह भी खूब चल रहे हैं, तो एलईडी डिस्प्ले भी हो सकता है, किसी तरीके का हो सकता है. So this is the basic principle of EM log. Any questions? Read through the write up about this. Flow sensor के बारे में हमने पढ़ा था.
one or two slides more here. Just go through it. Next, remember that when the ship, it is fitted at the bottom somewhere, the flow sensor. As the ship is going this way, the water flows through the sensor in opposite direction. और यहीं पे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ जो ऐसे है पानी. Now in this case, as we are seeing from the starboard side of the ship, the water is flowing from forward to aft, so the current will be accordingly port to starboard or starboard to port, depending on the right hand rule. Next, how do we find out the current? Port starboard में तो हो गया. So again we are looking at the flow sensor from forward. हम लोग भाव के सामने खड़े हैं जहाज पे, जहाज के नीचे, और हम लोग ट्यूब को देख रहे हैं. So we are seeing the front end of the tube, the flow sensor. We have made this magnetic lines of forces in vertical direction like this, from north to south. The current will be flowing from port to starboard, starboard to port. जैसा हमने left of the screen to right बोला था या right to left बोला था, depending on the relationship between the magnetic field and motion. Current is going to flow port to starboard. तो इस करंट को पिकअप करने के लिए what we do, we place two plates on the side of the tube. Two conductive plates called electrodes. Now the water column between the two plates is the conductor actually. The current flows in this water column itself. तो जो रेड वाला दिख रहा है इसी के बीच में. अगर हमने कंडक्टिंग प्लेट को बड़ा कर दिया, इलेक्ट्रोड्स को बड़ा कर दिया, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा क्योंकि कंडक्टर बड़ा हो गया. अगर छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा. If we made a small plate, अगर हमने बनाया, इलेक्ट्रोड छोटा रखा, तो वाटर कॉलम इतना ही होगा सिर्फ, इसमें करंट फ्लो होगा. So these are things which decide the system constants. कि कंडक्टर का साइज कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, इन सब के ऊपर में कांस्टेंट्स डिपेंड करता है. So this is how the EM log is working. Read through. Next. So now you have understood
Next, we are going to see a diagram, the block diagram basically. हम लोग 2-4 मिनट यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि टॉपिक खत्म हो जाए, फिर ब्रेक लेंगे, वही 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, अगली क्लास थोड़ी सी शॉर्ट कर लेंगे। बट लेट अस नाउ कंप्लीट, इसको आधे में नहीं छोड़ते, 5-7 मिनट और लगेगा ऊपर। नेक्स्ट, सर्वो मोटर जो है, जो ये देख रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग दिस, सर्वो मोटर इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मोटर which can be turned in a very controlled manner. अगर आपको चाहिए कि 3 डिग्री घुमे तो 3 डिग्री घुमा सकते हैं उस मोटर को। Using right kind of inputs, motor can be turned to जितना चाहिए उतना घुमा सकते हैं। 10 डिग्री घुमाना है, 10 डिग्री घूम जाएगा। ये सर्वो मोटर बहुत जगह लगा होता है, जो हमारा सैटेलाइट का एंटेना है उसमें भी लगा होता है, ताकि हमेशा सैटेलाइट को देखता रहे। जहाज इधर उधर को घूमेगी तो ऑपोजिट में एंटेना घूमेगा, ताकि वो सैटेलाइट की तरफ ही देखता रहे। So we can have analog display or we can have digital display, which is speed through water. Repeating last sentence once again, speed through water is the speed of the water passing by the hull. जब एग्जाम में बनाएंगे, एग्जाम में जब आप आंसर करेंगे तो यू शुड बी मेकिंग दिस डायग्राम, नॉट द होल थिंग जो हमने फ्लो सेंसर और मैग्नेट और ये सब बोला, वो डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे। और जो पिछले वाले डायग्राम में आपने देखी थी, इट इज एक्चुअली एट दिस प्लेस, यही है फ्लो सेंसर, इसी में है सब कुछ। वो मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉन मेटालिक, नॉन कंडक्टिव ट्यूब, the electrodes, all that. So ये पानी में नीचे है, जहाज के सामने। ब्रिज में हमारे पास ये सिस्टम लगा हुआ है, वेरी बेसिक काइंड ऑफ ब्लॉक डायग्राम। मास्टर यूनिट है। स्विचिंग से हम एक बार स्पीड देख लेते हैं और दूसरा अगर चेंज करें तो डिस्टेंस भी देख लेते हैं। इतने देर तक इतने स्पीड से चलता रहा तो इतना डिस्टेंस किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वो डेटा भी कलेक्ट होता रहता है और डिस्प्ले होता है। Please tell me, what is this 1 ampere current through coil? What is this? सर जो मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो करंट जा रहा है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो सोलोनॉइड लगा हुआ उसमें कॉइल होगी, उसमें ये करंट जा रहा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज दिस करंट प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये क्या है? जो वहां से मिली एम्पियर में करंट आ रहा है सर वापस। इंड्यूस्ड करंट विच इज पिक्ड अप फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स। अथवाशिप प्लेस जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें से आ रहा है। अगर पानी स्टिल होगी, नहीं मूव कर रहा है, तो ये करंट 0 होगा। अगर धीरे धीरे चल रही है तो थोड़ा थोड़ा आएगा करंट, तेज चलेगी ज्यादा आएगा करंट। So this is the diagram that you should practice when asking to explain the working of EM log. आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि फ्लो सेंसर होती है, उसको फॉरवर्ड आफ्ट में अलाइन करते हैं स्टील के नीचे। मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय सोलोनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट which is aligned vertically up and down. When the ship is moving forward, the water goes backwards. So the current is perpendicular to both of these, and which is athwaship direction, which is picked up through electrodes, amplified, and used to display
in the bridge, the speed through water. Such a simple device. This is a handheld EM log. इस वाले को सॉरी इस हैंडल को पानी के भीतर डालेंगे. Current will be flowing between 2 points. I mean the water will be passing through this in between the 2 points that you can see. यहाँ के बीच में पानी बह रहा होगा और इनके बीच में करंट फ्लो कर जाएगी. उसी करंट को लेके हम स्पीड इंडिकेशन दिखा देंगे डिस्प्ले में. इतना सिंपल डिवाइस. So the speed which you are seeing is analog display or digital display? Digital display. Very good. अभी Digital. आप सोच रहे हैं क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर ना. Good. So last topic which is remaining, what are the limitations of EM log? What are the limitations of EM log? This is the last question. Now that we have understood how it works, what is the principle, कैसा construction है, so we can talk about the limitations also. First of all, tell me what kind of speed it is giving. Speed through water, speed over ground. Speed through water. Speed through water. Can it give? Water. Very good. Can it give speed over ground? Anything to do with ground objects in this device? No, sir. No, sir. That means first limitation is that it is not giving SOG, only STW. Only speed through water it gives. First limitation. Second thing, when the ship is moving like this and the flow sensor is here, the water passing by, अभी now it is salt water. अगर हम fresh water में चले गए तो क्या होगा? There will be fresh water passing through this. So is the nature of the conductor changed? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिस्टम कांस्टेंट चेंज हो गया. जितना पहले करंट Yes, आता sir. था, कंडक्टर चेंज हो गया तो करंट भी कम चेंज हो जाएगा. So Yes, when sir. we go from one salinity Yes, sir. of the water to the other, जिसमें कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, तो स्पीड का एरर आएगा.